राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। लंदन स्थित थिंक टैंक चैथम हाउस में उन्होंने कहा कि भारत में डेमोक्रेटिक कॉम्पिटिशन का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। इसका कारण आरएसएस नामक एक संगठन है। यह एक कट्टरपंथी और फांसीवादी संगठन है जिसने भारत की लगभग सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगा। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड से की आरएसएस की तुलना। राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए उसकी तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर बना है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में एक नैरेटिव चल रहा है कि कोई भी भाजपा को हरा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि लोगों को ये भी समझना चाहिए कि बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप आजादी से लेकर अब तक के समय को देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी ज्यादातर समय सत्ता में रही है। भाजपा के 10 साल सत्ता में रहने से पहले हम 10 साल सत्ता में थे। राहुल गांधी ने कहा कि एक कट्टरपंथी फांसीवादी संगठन ने भारत के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह बात मुझे अंदर से झकझोर देती है कि कैसे देश के विभिन्न संस्थानों कब्जा कर लिया गया। प्रेस, न्यायपालिका, संसद और चुनाव आयोग सभी खतरे में हैं और किसी न किसी तरह से नियंत्रित हैं। राहुल गांधी ने बताया कि देश में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। कांग्रेस और यूपीए एक बात को लेकर हैरान थी कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से बदलाव हुए। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा ध्यान ग्रामीण इलाकों पर था, हम शुरुआत में शहरी क्षेत्र में चूक गए। यह एक तथ्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक बार फिर पेगासस का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आप किसी भी विपक्षी नेता से पूछ सकते हैं कि एजेंसियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मेरे फोन में पेगासस था, लेकिन ऐसा तब नहीं था जब कांग्रेस सत्ता में थी। उन्होंने ये भी कहा कि आप देख सकते हैं कि भारत में दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के साथ क्या किया जा रहा है। If you look at the time from independence to now, the Congress party has been in power for majority of the time, right? So it's not that the BJP has been in power. Before the BJP was in power for 10 years, we were in power for 10 years, right? And so it's not. I mean, the BJP likes to believe that they've come to power in India and they're going to be in power eternally. You know, that's not the case, right? But there is a set of changes that are taking place in India, and the Congress party and the UPA in its time were caught by those changes, right? The biggest change is that India is moving from a rural country to an urban country, right? And that changes the nature of the political discourse. That changes the nature of the structure. And we were focusing a lot on the rural space, and we missed the ball in the beginning on the urban space. And that's a fact, right? So those things are there. But to say that now the BJP is in power and the Congress is gone, I mean that's actually a ridiculous idea. So the conversation, the voice that was free flowing, the debates, those have all stopped. Some of the biggest decisions taken. Demonetization, which is demonetization of the Indian currency. We were not allowed to debate in Parliament, right? The farmers' bills, where large numbers of farmers were out in the street, we were not allowed a conversation in Parliament. The GST, we were not allowed. When Chinese troops entered our territory, we were not allowed to have a conversation in Parliament. So that stifling made us ask ourselves a fundamental question. How do we communicate with the people of India when the media is biased, when the institutions are captured? And the answer we came up with in the Congress party was this walk across the country, which has a tradition. The word is yatra, it's journey, but it's not simply a journey. It's a Indian idea of walking, of persevering, of listening, and of questioning oneself. And so we decided to do this. It was 4,000 kilometers, and it was quite an experience. It
It was a fun experience. States, I think 146 days. You only finished in January. So why don't you start by telling us why you did this walk and what you learned? Well, thank you. Thank you for having me here. It's an honor for me to be here. Thank you for coming. When I joined politics, 2004, the democratic contest in India used to be between political parties. And I had never imagined at that time that the nature of the contest would change completely. It was. I mean, if you had even told me at that time, I would have said that it was a ridiculous thing to say. But the nature of the democratic contest in India has completely changed. And the reason it's changed is because one organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. And maybe for those who don't know, can you explain what the RSS is? RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. So the वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।